warm welcome to everyone present here. So here, the second day of the bootcamp. It is an immense pleasure to welcome you all for this bootcamp organized by Into Legal World. I welcome the speakers of this bootcamp. We have Rahul Tiwari sir, who is the assistant professor at Indore Institute of Law, specializing in cybercrime and economic offences from associate at litigation firm Lamba and Lamba Gurugram, and the founder of LNS Associate Gurugram. We also have Gargi Sharma ma'am, who is the trainee associate at Law Seco, and has completed her Masters of Law from Vivekananda Global University. So we welcome Rahul Tiwari sir and Gargi Sharma ma'am to this bootcamp. So this bootcamp is all about litigation as seen yesterday. So this bootcamp will help you to flourish and attain an in-depth legal knowledge related to litigation. So today the topics to be covered are a discussion on legal notice, the basics of drafting, section 138, application and concept of NI Act, what is legal notice and its evidentiary value, analysis of section 118, section 138 and section 142 of NI Act, and analysis of res judicata and can a person file both civil and criminal case for check dissolval. So I once again welcome you to this bootcamp and hope you have a wonderful and informative session. Now I hand over the session to Aditi, who will give more insights into legal work. Hello, good evening everyone, and warm greetings to each and everyone. As this Into Legal World is basically established 6 years back, and we are here to initiate or to tell you about the litigation course, which was not told by any one of the faculties yesterday, and Rahul sir was telling you that you should avail the litigation course as there is many things more positive impact for the litigation course. And the litigation course is basically for the students who want to learn about the litigation, who wants to form their field in the litigation field, or who wants to do judiciary. This course is basically for all the students who are indulging their career in the legal field, as there are many opportunities and there is many perks which will be availed by all the students who will be availing the course, as the course is vary from 4 months, and the classes will be held only on the weekend, that is on Saturday and Sunday, and the classes will be taking only 2 hours per weekend. And there is as you have seen in your screen, that there is a live classes, recorded classes, and the live plus recorded classes, the amount will also be vary, as the live classes will entail 1888 rupees, and live class plus recorded lecture will contain 2950 rupees, as you will be dealing with all the as in the live classes you will be dealing with the subjects like Cr.P.C, IPC, Constitution, and also with other various subjects. And in the recorded lecture you will be availing the international law, IPC, constitutional, and various other subjects which will be dealt basically by the Rahul sir, which he has been taking the class today itself also, and today he will also dealing with he will also tell about this thing. And also when you see the perks, the perks are various, and there is number catina of perks you will be availing in the screen, that we will be providing you the internship to the top scorer firms and the senior advocates. We also provide you the merit certificates of merit and 50 certificate of merits and excellence, who will be submit their assignment on time, which you can see on the 4th point, that the certificate of merits on 60% attendance and 50% assignment submission. And during the course we will also provide you the landmark judgments to each and if in the course, if during the course of time, if any the landmark judgment is there. And also we will provide you the Aditi ma'am, do you excuse me, full subject coaching right now. Isha Agrawal ma'am, we will not provide you full subject coaching. We will provide you the
lectures on CRPC, IPC, constitutional. You can, I think I have already give this PDF in the group also. You can also see this regarding Shweta. Just open the course detail in which the topics are being dealt. Yes, you can see the concept of CRPC, the Bail Act reading, the IPC, which will be taking the sections from 1 to 4, IPC, the abatement part section 105, 107 to 113. We will be dealing numerous subjects and criteria. Like we will be also covering the NI Act, Negotiable Instrument Act, and also we will be covering the constitutional writ petitions, your everything we will be covered, individual subject teaching. Yes, indeed, every the topic wise, whatever you are seeing in the screen and whatever you are seeing in the PDF, it will be covered individually. It will not be compressed with other subject. Like when we are dealing with CRPC, we will deal only the CRPC content, and when we will be dealing IPC, we will be dealing IPC individually. Don't worry regarding this. Okay, so now I think I should leave because I am taking the time for the respective faculty and respective guest speaker. So I would request Ms. Gargi, Advocate Gargi Sharma, to take over this platform and inculcate their valuable experience and knowledge to the students as well. Thank you so much for giving your precious time too. Thank you, Aditi. I hope my video and audio is clear. Just to confirm that in the chat box first of all. Okay, great. So, hope you all are doing well. So, my name is Cr.P.C Sharma and I am semi-qualified chartered accountant and advocate by profession. So, I just want this session to be interactive. Okay, only not I am speaking, but you also need to respond to me if I am asking any questions to you. So just put it in the chat box, and at the same time, if you are having any questions, you can also put it in the chat box or can unmute also if required. Fine. So before starting the session, I want to know about my audience. So can you just quickly put in the chat box that whether you are law student or professional? Quickly, please, so that I can know. Okay, currently you are law student. Fine. Philip, great. Quickly, please. We will be starting the session in 5 minutes. Okay. Okay, so Shobhit. Okay. That's great. Okay. That's great. So mostly other students. Fine. So now we are beginning with the session. So first of all, I want to know from all of you, are you aware about legal drafting, or any one of you have done some sort of drafting? You can just put yes or no. And if anyone wants to share that experience, you can also unmute. Okay, no. Fine. Okay. Fine. So we're just going to start from the scratch. First of all, I will be discussing about the legal drafting. So just let me just share my screen. Just give me 1 second. I'll just share my screen. Okay, is this PPT visible to everyone? Is my screen visible to everyone? Please confirm once. Yes, ma'am. Okay. Okay. So before starting today's topic, that is on the legal notice, that is we are going to draft in terms of section 138 of Negotiable Instrument Act. So before starting the main topic, I just give you a basic introduction about the legal drafting. So what is legal drafting? Basically, drafting is, I just make it into both English and Hindi language so that it will be comfortable for all the students, right? Okay, so now taking you to the legal drafting part. Legal drafting basically क्या होता है अपने पास? That we are just drafting some sort of agreements, some sort of contracts or notices, or you can say memorandum. Basically, if you talk about the contract part,
कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, बिटवीन द टू पार्टीज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जहाँ पर आपका राइट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम बोथ साइड इज क्रिएटेड, एंड हमारा इंटेंशन क्या होता है दैट वी कैन गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स आवर लीगल लाइबिलिटीज एंड राइट्स। फाइन, यही हमारा लीगल ड्राफ्टिंग बेसिकली हमारा उसके पीछे जो इंटेंशन रहता है दैट इज कि हम अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। दिस इज व्हाट बेसिक इंटेंशन बिफोर लीगल ड्राफ्टिंग। अब लीगल ड्राफ्टिंग सिर्फ हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं होती, यहाँ पर अग्रीमेंट्स भी होते हैं। आज जैसे हम लीगल नोटिस के बारे में बात करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग के अंदर बेसिकली देखा जाए आपका जो एक ड्राफ्टिंग, अच्छी ड्राफ्टिंग हम जिसे बोलते हैं, क्योंकि इफ यू जस्ट सर्च ऑन गूगल you can find sample of contracts, sample of notices that are ready made. Okay, you can just copy them, paste them, and you can use them. But मेरा एडवाइस आप लोगों को हमेशा ये रहेगा कि if you are going for the drafting, you can take them as the base. ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं कि आपका कुछ चीज मिस ना हो, कुछ क्लॉजेस मिस ना हो, but completely relying on them, I don't advise. क्यों? इसका रीजन आपको मैं बताती हूँ। बिकॉज हमारा पार्टीज क्या है, हमारे केस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फाइन, अगर हमारा केस ऐसा है जिसके अंदर जो हमारे क्लॉजेस रिक्वायर्ड हैं वो उस एग्रीमेंट के अंदर नहीं दे रखे, तो क्या होगा उससे? इट विल बी ऑफ नो यूज टू बोथ द पार्टीज, ठीक है। एक जब लेमैन आपके पास आ रहा है तो बेसिकली वो इसलिए आ रहा है ताकि आप प्रोफेशनल हैं, आप उनका पूरा रिस्क कवर करते हैं। फाइन, सो जब भी हम लीगल ड्राफ्टिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो कुछ बेसिक जो रूल्स हम बोल सकते हैं वो होता है कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखना होता है, ठीक है। ऐसा एम्बिगुअस वर्ड्स या जो आपके, क्योंकि क्लाइंट क्या है, लेमैन, ठीक है, तो उसको भी वो चीज़ समझ आए, जो दोनों पार्टीज जिनके लिए आप कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी रहे। आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, आप जो भी रिलीफ चाह रहे हैं, दैट मस्ट बी इन सिंपल लैंग्वेज। तो फर्स्ट आपका मेन होता है एकदम सिंपल लैंग्वेज हमको यूज़ करना है, हमको एम्बिग्विटी नहीं रखनी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, सिंपल वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जो कि हर पार्टी अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज यू आर एडवोकेट, यू आर प्रोफेशनल, इट डजेंट मीन कि जो अदर पार्टी है, जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को देखने वाली है या उस नोटिस को पढ़ने वाली है, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल, ठीक है। तो बेसिक आपको ये रखना है कि आपका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, आपका जो भी ड्राफ्टिंग है वो इस तरीके का होना चाहिए जहाँ आपका पूरा क्लाइंट का रिस्क कवरेज होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं पे भी से भी कॉपी पेस्ट करो, लेकिन जो सिर्फ आप उसको बेस की तरह लेंगे, बाकी जो आपका डिटेल्स होगी वो आपका केस टू केस वेरी करेगी। आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस एग्रीमेंट को लेके, उस नोटिस को लेके, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। सो दिस इज यू कैन से अ बेस कि आपको लीगल ड्राफ्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपका कोई कट टू कट आपके पास फॉर्मूलेज है या कट टू कट आपके पास कोई रूल्स हैं, बट आपको सिर्फ ये पर्पस ध्यान रखना है कि हमारा जो पर्पस है वो अकम्प्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ड्राफ्ट कर दिया एंड दैट ड्राफ्ट इज नॉट ऑफ यूज, जो मेन क्लॉजेज उस पर कवर होनी चाहिए या जो मेन उसकी इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए वो नहीं, सो इट विल बी बेसिकली ऑफ नो यूज, ठीक है। सो एक ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। सो एम आई क्लियर ओवर दिस पॉइंट? एक बार मुझे सब बताएंगे कि उनको लीगल ड्राफ्टिंग बेसिकली क्या होता है, वो समझ आया कि नहीं। आई जस्ट फॉर वंस स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट आई कैन सी द कमेंट्स। या किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेस टॉपिक। ओके, सो आप लोगों को क्लैरिटी है। सो हमेशा जो भी ये सेशन ले रहे हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है एक चीज़, बहुत कॉशियस रहना है बाय ड्राफ्टिंग कि जस्ट आप कट कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। ले उसका अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है, एंड इसके अलावा जो भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आप उसको 2-3 बार गो थ्रू करें। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में, नोटिस के अंदर। वाई? क्योंकि एक बार हम पढ़ेंगे तो हमें इसका बेसिक चीज़ समझ आएगा। जब हम 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तब हमें वी विल रियलाइज कि क्या चीज़ रह गई है, क्या रिस्क कवर नहीं हुआ। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू जस्ट गो 3 टाइम्स थ्रू। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो, अग्रीमेंट हो, कुछ भी हो लीगल, जो आपको लाइबिलिटीज़ या राइट्स आपको इन्फोर्स कराने के लिए आप यूज़ करने वाले हैं, सो जस्ट बी अवेयर कि वो आपको 3 टाइम्स आप उसको रीडिंग देंगे। सो आई थिंक नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड विद द सेशन इफ नो वन हैज़ एनी क्वेरीज। फाइन, सो आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन नाउ अगेन। सो आज हम जैसे कि 138 सेक्शन के बारे में, अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते हैं।
So any one of you are having idea कि आपका legal notice क्या होता है? Anyone? आप लोगों ने अपना LLB के अंदर पढ़ा हो या कुछ कोर्स वगैरह में आपने पढ़ा हो? क्या कोई मुझे बता सकता है कि बेसिकली आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 सेक्शन जो है वो किस चीज़ से डील करता है? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. नहीं भी पता है तो यू कैन जस्ट सिंपली पुट नो, और अगर किसी को पता है तो यू कैन अनम्यूट या आप चैट बॉक्स में भी ओके तो फिर चेक बाउंसिंग. ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो दैट मुझे पता तो लगे कि मेरी ऑडियंस सो तो नहीं रहा कोई. या धीरज मैम Neeraj, your voice is not audible. Okay, so maybe you are unmuted by mistake. Okay, Urvashi, just a second. What you have put on? Formal communication between two parties. I am asking about section 138 to issue legal warning. That is the meaning you are telling me about the legal notice. I am asking about 138. Right, dishonor of check. So, okay, some of you are having fair idea about section 138. Okay. So now I will just explain you what is basically section 138. So basically जो हमारा सेक्शन 138 है वो किस चीज़ से आपका डील करता है? I'll just let you know that part. Okay. So this is how Negotiable Instrument Act 1881 has defined about the section 138. So what it state? Bouncing a check is an offence that is punished by a fine up to double the value of the check, up to 2 years in jail or by both. A check is said to have bounced when the payee delivers it to the bank for payment and the bank returns it unpaid with a notation indicating insufficient funds. Fine. So okay. अभी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं. जस्ट लीव द प्रोविजन. हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे कि एक पार्टी होती है दैट इज नोन एज ड्रॉअर, एक पार्टी होती है दैट इज नोन एज ड्रॉयर. ठीक है. सपोज आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मैंने किसी के ऊपर चेक लिखा, तो चेक लिखने वाला जैसे जिसने चेक ड्रॉ किया दैट इज नोन एज ड्रॉअर. यानी कि मैं कौन हूँ? ड्रॉअर हूँ. ठीक है. एंड आप कौन हुए? ड्रॉइंग हुए, जिसके ऊपर चेक है. हमेशा याद रखना कि चेक जब भी आप ड्रॉ करते हैं दैट इज फॉर सम लीगल लाइबिलिटी. ठीक है. आपकी कोई लाइबिलिटी है मुझे पेमेंट करने की, इसलिए मैंने आपको वो चेक ड्रॉ करके दिया है. ठीक है. अब मैंने आपके ऊपर वो चेक ड्रॉ किया. सपोज मैंने आपको 50,000 का चेक ड्रॉ करके दिया. नाउ आपने मुझे उस पर सपोज एक डेट डाल के दी कि ओके आई विल रीपे दिस चेक बाय सो एंड सो डेट. ठीक है. आपने मुझे बेसिकली जो आपका ड्यूरेशन आरबीआई नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है वो आपका रहता है 3 मंथ्स या वैलिडिटी ऑफ चेक. ये आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है दैट इज एज पर योर आरबीआई सर्कुलर. पर अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग चाहेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 6 मंथ या वैलिडिटी ऑफ चेक. तो यहाँ थोड़ा आपका डिफरेंस रहता है. बट एक्चुअली आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में जो फॉलो हो रहा है दैट इज 3 मंथ और द वैलिडिटी ऑफ द चेक. ये आपका आजकल फॉलो अप हो रहा है. ठीक है. सो अभी मैंने आपको चेक दिया 50,000 का. अब आपकी लाइबिलिटी बनती थी कि ऑन द सो एंड सो डेट यू विल बी रीपेड. अब बेसिकली हम देखें, अब जिस दिन आपने डेट दिया मैंने उस दिन जाके चेक आपके बैंक में लगा दिया. फाइन. अब जब मैंने आपका चेक लगाया सो क्या हुआ? आई रिसीव द इंटीमेशन ऑफ द बैंक कि योर चेक इज बाउंस्ड. ठीक है. अब आपका बाउंस्ड बेसिकली 2 रीजन की वजह से हो सकता है. या तो आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स है, यानी कि मैंने आपको बोला था आपको 50,000 पे करना है, आपके बैंक पे इट इज शोइंग नील बैलेंस, देयर इज नो 50,000 इन इट. या सेकंड रीजन आपका ये भी हो सकता है दैट यू आर ओनली हैविंग 20,000 इन योर बैंक अकाउंट. तो आपका 30,000 जो रहा दैट इज व्हाट? इनसफिशिएंट फंड्स. तो बेसिकली ईदर नो फंड्स और इनसफिशिएंट फंड्स. तो बेसिकली ये 2 रीजंस होते हैं जहां पर आपके चेक बाउंस का केस अकर होता है. फाइन. अब क्या हुआ? When your check is bounced, the court will intimate to me that this check is dishonor. अब आपको जैसे सेक्शन में बोला कि आपके पास यहाँ पे एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज होती है, पर ये क्रिमिनल लाइबिलिटी सिर्फ चेक बाउंस बोल देने से नहीं होती है. ठीक है. इसका एक 3 पॉइंटर्स हम कह सकते हैं कि ये प्रोविजन आपका जब अप्लाई होता है जब आप ये 3 कंडीशंस के साथ कंप्लाई करते हैं. ठीक है. इफ इन दिस ओके दे हैव नॉट गिवन इट. ओके ओके. सो 3 वो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 आपके पास क्या होते हैं बेसिकली पॉइंटर जो आपको याद रखने होते हैं जहाँ आपका सिविल कॉज एक्शन अराइज होता है. एनीवन सेइंग समथिंग? So are you understanding till here?
सिनेरियो समझ आया क्या हो रहा है? मैंने आपने चेक विड्रॉ किया, चेक ड्रॉ किया, आपने चेक का डेट दिया, आई जस्ट फाइंड इट इन द बैंक एंड बैंक ने मुझे इंटीमेट किया दैट द चेक इज डिसऑनर. ठीक है, बट ओके ग्रेट. यस ईशा, ड्रॉअर जिसने चेक दिया, यस राइट, परफेक्ट, फाइन. सो अभी जब मैंने बैंक में, हमको बैंक से इंटीमेट हुआ कि आपका चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है. अब आपका सिविल एक्शन, सिविल एक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट सूट फाइल करोगे. ठीक है, यू विल गो कि ओके कोर्ट, हमने इनको 50,000 दिया था एंड दैट पर्सन हैज नॉट येट पेड इट. ये जो आपका एक्शन है सूट लेके जाने का कोर्ट में, ये कब अराइज होगा? फर्स्ट सिचुएशन जब आपने कोर्ट के, जब आपको इंटीमेशन मिला, सो उस इंटीमेशन के 30 डेज के अंदर, व्हाट इज द टाइम लिमिट? 30 डेज. 30 डेज के अंदर आपको एक लीगल नोटिस, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, वो लीगल नोटिस आप ट्रॉय को दोगे. ठीक है, यू बेसिकली, अब लीगल नोटिस का मैं आपको मतलब बता देती हूँ यहीं पे. लीगल नोटिस बेसिकली क्या है? एक हम कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, या हम कह सकते हैं एक इंटीमेशन जो हम डिफॉल्टिंग पार्टी को दे रहे हैं. क्या बताने के लिए? दैट यू हैव डिफॉल्टेड एंड यू हैव टू कंप्लीट योर लाइबिलिटी. ठीक है, अगर आपने अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं करी, फुलफिल नहीं करी, एंड इन दैट केस आपके अगेंस्ट में हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे. सो दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल मीनिंग ऑफ लीगल नोटिस. मैं एक बार आपको लीगल नोटिस का मीनिंग है दिखा देती हूँ, सो दैट यू आर हैविंग. A legal notice is a formal written communication between the parties. Through a legal notice, the sender notifies the recipient about his intention of undertaking legal proceeding against the latter. Fine. So हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? अब यहाँ पर हमने 30 डेज हमको इंटीमेशन रिसीव हुआ बैंक से, उसके 30 डेज के अंदर हमने ड्रॉय के ऊपर लीगल नोटिस सर्व किया, जहाँ हमने उनको इंटीमेट किया कि अगर आपने इस डेट तक, अब कौन सी डेट है, मतलब कितना ड्यूरेशन हम उनको दे रहे हैं, हम उनको बोलेंगे 15 डेज का टाइम. अगर आपने 15 डेज तक अमाउंट पे नहीं किया तो क्या होगा? हम आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे. ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड कि अब जब ये 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, अगर 50 डेज के अंदर भी ट्रॉय ने आपको पेमेंट नहीं किया, तब आपका सिविल एक्शन का कॉज अराइज होगा. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि हम कब कोर्ट में जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं. सो आफ्टर दिस 15 पीरियड्स का जो आपका ड्यूरेशन है, दैट विल एक्सपायर. आफ्टर दैट यू विल गो इनटू द कोर्ट एंड फाइल द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ योर अमाउंट. ठीक है, अभी तक यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कब हमारा सिविल जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हो रहा है? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? ओके, सो एक बार मैं आपको फटाफट से, ओके अभिषेक, सो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मे लीड सिविल सूट. यस यस राकेश, इट कैन. फाइन, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल डिपेंड ऑन. ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ. जैसे सपोज अभिषेक और मैंने चेक ड्रॉ किया अभिषेक के ऊपर. अभिषेक ने मुझे 50,000 का पेमेंट नहीं किया. अब उस पेमेंट ना होने पर मैंने क्या किया, हमको इंटीमेशन आया, सपोज आज है 10 सितंबर. 10 सितंबर को हमें कोर्ट से इंटीमेशन आया. सो 10 सितंबर से 30 डेज, जो हमारा 30 डेज का ड्यूरेशन जाएगा, दैट इज योर अक्टूबर. ठीक है, तो अक्टूबर 10 अक्टूबर के अंदर हमने 30 डेज का जो हमको ड्यूरेशन मिला, हमने उसके अंदर मैं अभिषेक को लीगल नोटिस भेजूंगी. ठीक है, कि भाई अभिषेक आपका ये लीगल नोटिस है, आपको मैं ये इंटीमेट करती हूँ कि अगर आपने इस पीरियड के अंदर मुझे अपना अमाउंट पे नहीं किया, देन आई विल गोइंग टू इनिशिएट अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू. ठीक है, अब 10 अक्टूबर से 15 डेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो 15 डेज, अगर वो 15 डेज के अंदर अभिषेक पेमेंट कर देते हैं, देन इट विल बी फाइन. अगर उन 15 डेज के अंदर अभिषेक पेमेंट नहीं करते हैं, देन आई एम हैविंग राइट कि मैं कोर्ट में जा सकती हूँ अभिषेक के अगेंस्ट में, एंड आई कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग. तो दिस इज व्हाट योर सेक्शन 138 सेज. अब 138 में एक तो आपका हो गया सिविल एक्शन. ठीक है, कि आप कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे. 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इम्पोज करता है. जैसे कि मैं अभी आपने पीपीटी में देखा होगा, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या है? फर्स्ट इज योर इम्प्रिजमेंट, जो कहाँ तक हो सकती है? 2 years. ठीक है, अभिषेक कैन बी इम्प्रिजन्ड अप टू 2 years. या सपोज 50,000 का चेक था, तो इसका ट्वाइस अमाउंट, यानी कि 50,000 इंटू 2 अप टू 1 लाख. यहाँ पर आपके पास पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है. ठीक है, अगर ग्रीवियंस है, अगर ग्रेव है ऐसा केस का चीज अगर कोर्ट को लगता है, तो दे कैन इम्पोज बोथ द इम्प्रिजमेंट एंड द पेनल्टी ऑल्सो. अदरवाइज देयर इज और ऑप्शन, इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी और
ये हमारे पास बेसिकली सेक्शन 138 है जो आपके एनआई एक्ट के अंदर दे रखा है. हैव यू गॉट अप टिल दिस? अगर 138 हमको क्लियर है तभी हम अपना लीगल नोटिस की तरफ मूव ऑन करें. इज इट क्लियर? ओके ओके ग्रेट. फाइन. ओके सो नाउ मैम विल पेनल्टी डिफर फॉर. यस, इट इज द बेसिकली द अमाउंट जो आपने अमाउंट दिया है. सपोज अगर मैंने 50,000 की इसमें लिखा हुआ है, अगर इफ यू जस्ट सी दैट पीपीटी अगेन, just a second, I'll just share that PPT again. इसमें क्या है? Amount of check. Over here somewhere. Yeah. If you can see there, that is written double the value of the check. ठीक है, twice the value of the check. तो अगर मैंने 50,000 आपका चेक का अमाउंट है तो 50,000 इंटू 2 होगा. अगर वही 1 लाख होता तो वो 1 लाख इंटू 2 होगा. तो पेनल्टी इज बेसिकली twice the amount of the check. Is it clear? इन्होंने पूछा था या छाया. इज इट क्लियर? सो दैट विल डिपेंड कि आपका अमाउंट ऑफ चेक क्या है. ओके फाइन. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली 138. अब आपको समझ आ गया कि हमारा कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा. अभी हम आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं लीगल नोटिस की. सो एक बार मैं वापस से लीगल नोटिस का आपको डेफिनेशन बता देती हूँ. लीगल नोटिस बेसिकली क्या है? एक कम्युनिकेशन है, एक इंटीमेशन है जो हम अदर पार्टी को कर रहे हैं, so that they know that if they fail to complete their obligation, fail to fulfill their obligation, then we will be initiating legal proceeding against them. ठीक है. so अभी हम थोड़ा सा एसेंशियल्स देखते हैं कि बेसिकली देखो, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक अग्रीमेंट की बात करते हैं, उसमें हमारे पास काफ़ी जगह ऐसा रहता है कि एक लिस्ट रहती है क्लॉजेस की कि हमें कौन कौन से क्लॉजेस कवर करने होते हैं. ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास पैटर्न रहता है. बट इन केस ऑफ लीगल नोटिस हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता. दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द केस. ठीक है, आपका क्या केस है, आपका क्या मैटर है, क्या आपका लीगल इशू है जिसके लिए आप लीगल नोटिस दे रहे हो. सो एक आपको फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वो ड्राफ्टिंग रहता है. ठीक है, इसके लिए आपको कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी ऐसा लिस्ट नहीं मिलेगा कि ओके ये पॉइंट्स आप कवर करते हो. ठीक है, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि जो एक बेसिक एलिमेंट्स का जो आइडिया होता है दैट आई कैन गिव यू कि हाँ ये चीज़ आपके पास रहती है. ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मल नोटिस और लीगल नोटिफिकेशन फॉर्म. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें उसके अंदर पार्टीज के बारे में बताना होगा. दैट इज कि जो भी पर्सन जिसको हम लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं, उसका आइडेंटिटी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका जो भी उसका बेसिक डिटेल्स है वो सब उस लीगल नोटिस के अंदर रहना चाहिए. ठीक है, देन आप बताएंगे देन व्हाट यू विल बी टेलिंग कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है. ठीक है, मतलब आपका डेमेजेस, आप किस चीज़ के लिए रिलीफ क्लेम करना चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है. ठीक है, आप उनको किस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना चाह रहे हो. इसके बाद आप बताओगे रिलीफ, क्या आपने रिलीफ चाह रहा है. जैसे कि आपने उसके अंदर आप बोल रहे हो कि हमें सिर्फ अपना अमाउंट चाहिए 50,000 या उस अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट था वो भी चाहिए. जो भी आप रिलीफ मांगना चाह रहे हो कोर्ट से, वट एवर रिलीफ यू वॉन्ट कोर्ट विल सॉल्व, वो आप मेंशन करोगे. इसके बाद बेसिकली आपका एक बहुत ही बेसिक सा जो चीज़ रहता है वो आपका रहता है पूरा केस का डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 138 ये आपका बेसिकली एक बहुत ही जनरल सा फॉर्मेट था लीगल नोटिस का. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी अग्रीमेंट में जाते हैं तो उनके लिए प्रॉपर क्लॉजेस रहते हैं बेसिकली. लाइक इफ यू गो फॉर लीज एग्रीमेंट, फॉर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहे हो तो यू कैन फाइंड अ एग्जॉस्टिव लिस्ट. आपको एक मिल जाता है कि ओके दीज आर द क्लॉजेस विच यू नीड टू हैव. ठीक है, पर लीगल नोटिस एक बेसिकली सिंपल फॉर्मल कम्युनिकेशन है, सिंपल फॉर्मल इंटीमेशन है. तो इसके लिए यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड फॉर्मल. ठीक है, केस टू केस वेरी करेगा. ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपका सिंपल बेसिक बात करती हूँ, अभी अपना जो 138 वाला चल रहा है, तो 138 वाले में क्या होगा, आपका कैसे एक लीगल नोटिस बेसिकल ड्राफ्ट होगा. सो इसमें सबसे पहले आप ऊपर एक डिटेल्स होंगे आपका रेसिपिएंट के बारे में. ठीक है, उनका नाम, उनके फादर, उनका एज या जो भी उनका बेसिक डिटेल्स आपका रहता है वो सारी डिटेल्स चाहिए अबाउट द पार्टीज. देन आप क्या बताओगे, देन आप चेक की डिटेल्स होगी. क्योंकि जब आपने चेक ड्राफ्ट किया होगा, चेक ड्रॉ किया होगा, यू विल बी हैविंग द चेक नंबर, यू विल बी हैविंग द डेट ऑफ द चेक, यू विल बी हैविंग अदर जो भी आपका चेक का डिटेल्स होता है कि कौन सा ड्राफ्ट था, वो सब डिटेल्स यू आर हैविंग. ठीक है, तो जब आप लीगल नोटिस में ये सब चीज़ें मेंशन करोगे राइट कि ये हमारा चेक नंबर, दिस इज चेक नंबर था, ये डेटेड चेक था, दिस वाज द अमाउंट. ठीक है, ये हमने डेट पर पार्टी को दिया था एंड पार्टी प्रॉमिस्ड कि इस डेट को हम पेमेंट करें. ठीक है, एक
पैराग्राफ के अंदर आप ये सब चीज़ें बोलोगे ताकि कोर्ट को पता लगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके होते हैं ये आपके एज अटैचमेंट्स भी जाते हैं जब आप कोर्ट के पास अपना सूट लेके जाते हैं. सो यू नीड टू शो कि ओके दिस इज द चेक विच द कॉपी ऑफ द चेक विच यू हैव ड्राफ्टेड, दिस इज द कॉपी ऑफ नोटिस विच वी हैव प्रेजेंटेड ओवर द अदर पार्टी. एंड आफ्टर दिस ऑल्सो इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए आज हम कोर्ट में आए. जो मैंने आपको बताया कि 15 डेज का टाइम लिमिट रहता है जब तक अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है. सो आपने चेक का अपना डिटेल्स बता दिया. इसके बाद आप उनको बोलोगे कि आपके पास यू आर हैविंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 15 डेज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यू आर हैविंग, यू हैव टू पे दिस अमाउंट बैक टू मी विद इन दीज 15 डेज, ठीक है. अगर आपने पेमेंट नहीं किया देन वी विल बी गोइंग टू टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट यू. फिर आप उन्हें बताओगे कि हमारा ये रिलीफ है, हमें यही अमाउंट, अगर आप चाह रहे हो कि कोई इंटरेस्ट वगैरह भी आपको रिसीव हो दैट विल यू विल मेंशन. एंड उसके बाद आप उन्हें बताओगे कि ओके वी आर गोइंग टू टेक द लीगल एक्शन अगर आपने 15 डेज के अंदर हमारा अमाउंट पेमेंट नहीं किया. एंड योर सिग्नेचर एंड जो आपका बेसिक फॉर्मेटिंग रहता है वो रहेगा. सो यू आर सीइंग बहुत ही बेसिक रहता है चीज़ें, बस आपको ये करना है कि आपका पूरा केस का उसके अंदर डिटेलिंग आ जाए. तो अभी तक का आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहा कि आप 138 का लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करने वाले हैं, ठीक है. इफ आई एम हैविंग जस्ट वेट अ मिनट, आई एम जस्ट स्टॉप दिस, आई एम जस्ट सी कि अगर मेरे पास कोई सैंपल अगर इफ दे आर हैविंग सो दैट आई कैन शो यू कि आपका जो मैंने आपको बोला हाउ इट विल वर्क. गिव मी अ सेकंड. अगर आप नॉर्मल भी जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है. एक बार के लिए मैं एक बार गूगल से आपको एक बार लिख के बता देती हूँ एक सैम्पल सो दैट यू आर हैविंग सफिशिएंट आइडिया. ओके, is my screen again visible? Yes, ma'am. Yeah, what you are asking, Lakesh, ma'am, can't this counted as legal contract because legal and legal contract are two different things. Legal notice. Yes, legal contract is different. Legal notice is different. क्योंकि जब आप when you go for the contract basically दो parties enter करती हैं जहाँ पे आपके पास एक clauses होते हैं. Legal notice is simply और intimation, ठीक है. इसका एक जो आप कह सकते हो evidentiary value कितना है कि आप कोर्ट के अंदर ले जाके उनको बोलोगे कि हमने उनको legal notice serve किया है and they have not fulfilled with that legal notice, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, लीगल नोटिस का जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड रहता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट राकेश? लीगल नोटिस का बहुत ही सिंपल एक जो उसका ऑब्जेक्टिव यू कैन से इट्स इंटीमेटिंग द अदर पार्टीज. वेयरएज जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है. वो जो लीगल लायबिलिटीज और राइट्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. राकेश, हैव यू गॉट माय पॉइंट? Rakesh, can you hear me? Yes, yes, they are. Yeah. Okay, okay. Okay, so fine. So I'm showing you the sample legal notice. Okay. Is it visible? Yes. Okay, so now you can see आपने लिखा ये बेसिकली एक हम कह सकते हैं एक सैंपल है, ठीक है. कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया आपका टू, दैट इज योर टू दिस पार्ट. ये आपका बेसिकली क्या हो गया, आपका रिसिपिएंट डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे, नेम, एड्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. देन यू विल बी गिविंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज दिस इज लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दिस नीड्स टू बी प्रॉपर लाइक दिस ओनली, ठीक है. हमको बताना था क्योंकि लीगल नोटिस बहुत सारे केसेस के अंदर अलग अलग सेक्शंस के अंदर, अगर हम आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा हो सो इन सीपीसी आल्सो अंडर सेक्शन 80 वी हैव दैट कांसेप्ट ऑफ लीगल नोटिस. सो यू नीड टू मेंशन क्लियरली अबाउट व्हिच प्रोविजन एंड व्हिच एक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. किसके अंडर में आप नोटिस इशू कर रहे हैं. यू कैन सी द सब्जेक्ट ओवर हियर, यू कैन जस्ट गिव द सैल्यूटेशन ओवर हियर. देन यू विल बी writing over there under the instructions and authority from our client having their office at we serve upon you
the following notice of demand under section 138 of negotiable instrument act. So basically आप जब advocate में you are in the professional capacity, so you have to mention about your client also कि ठीक है XYZ हमारे client हैं जिनको office suppose दिल्ली में है, so on the basis of that person we are serving the legal notice. So this is the line you need to mention. Then what I was telling about कि आपको check का details देना होगा, ठीक है. So the check number, the date, the amount, when it was drawn, on which branch it was drawn, and I told you that जब भी check draw होता है that is कि आपको कोई legal liability है जो आपको discharge करना है. So was issued by you in lieu of discharge of your financial liabilities to us. तो आपने अपना पर्पस बता दिया कि हमने ये चेक दिया था, ये चेक की डिटेल्स है, एंड हमने क्यों दिया था, बिकॉज दैट पर्सन हैड टू डिस्चार्ज द लीगल लाइबिलिटी. सो ये आपने अपना पर्पस बता दिया. अब यहाँ आप अपना पूरा केस बताएंगे. द सेट चेक वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट द सेम हैज बीन रिटर्न बाय योर बैंक विद द एंडोर्समेंट. वो जो आपका एंडोर्समेंट जो आपका रिटर्न का इन्फॉर्मेशन आता है बैंक से, दैट ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड एज अ कॉपी टू द कोर्ट. जब आप अपना पूरा केस फाइल करते हैं तो इसका भी एक कॉपी आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट के अंदर. बैंक इन्फॉर्म us through their check return memo dated. This memo will also be provided. जो memo जो आपके पास आता है कि okay insufficient funds था या no funds था, तो ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा उस मेमो के ऊपर जो डेट होती है, एंड उसका भी मेमो का कॉपी आपके पास कोर्ट में जाता है. ठीक है. दिस फैक्ट वाज ब्रॉट टू योर नोटिस बाय अ क्लाइंट वाइड लेटर डेटेड दिस. फिर आप अपने लेटर का डेट बताएंगे कि हमने अपने क्लाइंट को इस लेटर के थ्रू वी हैव इंटीमेटेड द पर्सन. In spite of many telephonic reminders and personal visits, you felt it. तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ठीक है, we have again and again we have communicated to you, but you have not made payment still. ठीक है, वो जो हमने बोला था कि 30 days के अंदर जब हमारे पास कोर्ट से आया डिसऑनर का, हम उनको इन्फॉर्म करे जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, बट स्टिल ही फेल टू रीपे द अमाउंट. देन हम उनको यहाँ बताएंगे कि अभी हमारा सेक्शन 138 के अंदर वी आर सर्विंग लीगल नोटिस अपॉन यू, एंड इफ यू आर फेल्ड to make payment within 15 days, then you will be liable for legal proceedings. ये हम यहाँ पर उनको बताएंगे. You are now requested to make the payment of the above said amount immediately in accordance with the provisions, following which the criminal proceedings will be initiated against you, and this will be the details of yours, your date, your name, your address. So basically this is how a legal notice is drafted. Okay, so just let me complete once, then I will be taking up your questions. So what I'm telling, yeah, so basically आप लोगों को जो हम कह सकते हैं बेसिक जो चीज़ें याद रखनी है वो ये होती हैं कि आपका डिटेल्स प्रॉपर जाना चाहिए अबाउट द रिसिपिएंट एंड द सेंडर. सेकेंडली, जो आपने चेक ड्रॉ किया है उसका प्रॉपर डिटेल्स जाना चाहिए, आपका डेट, आपका अमाउंट, आपका, और जो आप अपना केस को पूरे अच्छे से इलैबोरेट करेंगे कि ओके ऑन दिस दे हैव टू रीपे बट दे हैवंट रीपे. इसके अलावा जो आपको इंटीमेशन आया है फ्रॉम बैंक अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक, उसका पूरा डिटेल्स प्रॉपर रहना चाहिए, एंड यू विल बी इंटीमेटिंग कि अगर आपने रीपे नहीं किया बाय दिस डेट, देन यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल और लीगल प्रोसीडिंग्स. सो दिस इज हाउ यू कैन हैव what you can say proper legal drafting of legal notice. So I hope this concept is clear to you. Okay, so we are having some questions. So, ma'am, how much fees is charged for drafting a legal notice? That depends upon the professional which is drafting legal notice, and depends on your case also. Fine. So there is no fixed as such fees, because obviously legal notice is drafted by your advocates or lawyers, practicing lawyers. So that only depends on them. There is no fixed fees given. Okay, Isha. Then Abhishek, what if the legal notice is was received or the address is wrong? Then it will return. Then it will return to the recipient, and then you need to again resend it. Okay, that's why I told you, please keep that address and everything accurate. It will return back. Okay, Abhishek? Okay, Lavkesh. Now I have one general doubt. Is every lawyer have the same wakalat number? It is different and context. The address is correct but not received. So by a recipient. Isha, what you are telling? But ma'am, what is the address is correct but not received by a recipient?
Okay, if the address is correct, but not receive. So recipient will give this thing in the court now. He will tell you, okay, I haven't received the legal notice. He will put this as the argument in the court. And obviously, we are giving 15 days time. So in that 15 days time, then it should be considered that it is a valid communication. That will be governed by our Indian Contract Act. Fine, Indian Contract Act, we are having sections which deal that when the communication is deemed to be completed. So for that, the court will see provisions of Indian Contract Act that whether it is a valid communication or not. Because the other party has to prove this now. कि whether there is क्योंकि अगर पूरा सब कुछ सही है, it has been either maybe अगर आपका registered post है, acknowledgement post के through आपने उनको send किया है legal notice and you are having that what you say number of that legal acknowledgement, so it will be considered as valid communication. ठीक है, just hold on. Yes, it says once letter is posted considered. हाँ, so that will depend on the Indian Contract Act provision. अगर आपके पास वैलिड एक्नॉलेजमेंट आपने एक्नॉलेजमेंट जो आपका ड्यू होता है उसके थ्रू अगर आपने सर्विस किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अगर आपने सर्विस किया है, सो इट विल बी वैलिड सर्विस. ठीक है, और ये है कि अगर सपोज रिसिपिएंट ने उसके ऊपर साइन करके दिया है कि ओके आई हैव रिसीव्ड, बट आफ्टरवर्ड्स इट कैन बी ही हैज डिनाइड. ठीक है, अगर ऐसा उसने डिनाई किया तो कोर्ट विल सी कि अगर कोई आपके पास रीजनेबल कॉज नहीं है डिनाई करने का और अगर आपको प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है, सो इट विल बी अ वैलिड कम्युनिकेशन. ठीक है ईशा, या राशि सेक्शन 4 ऑफ आईसीए भाई. ठीक है, इसके अलावा एक क्या क्वेश्चन था छाया का. Now, how many times a legal notice can be sent to a person? There is no limit for this. There is no limit given under the act. So, you are having that time period only. 15 days के अंदर पेमेंट आना चाहिए. उसमें भी हमने देखा था that again and again टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रहा था but he failed to pay. So ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है आपका. आपको लीगल नोटिस सर्व करना है. You can just serve. क्योंकि I'll just share my experience. I was interning somewhere. So वहाँ पर हमारे पास यही था कि बहुत सारे बैंक की तरफ से वो लीगल नोटिस इशू हुआ था टू द पार्टीज. ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया था. तो उस केस में क्या होता है कि हमने उनको पर ये जो आपने क्वेश्चन पूछा इसके अंदर आपको जो सपोज आपने फर्स्ट लीगल नोटिस इशू किया, पार्टी की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देन यू अगेन सेंड देम लीगल नोटिस. तो उस लीगल नोटिस सेकेंड लीगल नोटिस के अंदर आप फर्स्ट लीगल नोटिस का रेफरेंस दोगे कि वी हैव गिवन दिस लीगल नोटिस ऑन दिस डेट ऑल्सो बट द पार्टी हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू दैट लीगल नोटिस ऑल्सो. ठीक है, वहाँ सेकेंड वाले लीगल नोटिस के अंदर या जब भी आप लीगल नोटिस सर्व कर रहे हो तो उससे पहले वाले लीगल नोटिस का आपको जो भी रेफरेंस है, जो भी उसका डेटिंग वगैरह है, वो सब आपको प्रोवाइड करना पड़ता है एंड इवन उसकी कॉपी भी आपको कोर्ट के अंदर देनी पड़ती है. हैव यू गॉट माय पॉइंट छाया? यस, ओके. या लवकेश, जस्ट अ सेकेंड, आपको क्वेश्चन ऊपर चला गया. Is every lawyer have the same wakalatnama? It is different than in what context? See, I don't have much knowledge because I'm not practicing in this like in court and all. But yeah, it is there. The wakalatnama is different क्योंकि उसके अंदर आपका details वगैरह different है. ठीक है, so it will be better that अगर कोई practicing lawyer है, so if you ask this question to them, they will be a right person to clarify you this. But हाँ, ये है कि वकालतनामा अलग-अलग रहता है सबका. एक वकालतनामा से नहीं होता. It is different for every lawyer. उनका details, उनका सब चीज़ें वो अलग-अलग रहता है. ओके लवकेश, वकालतनामा बेसिकली जो आपको जो पावर देता है टू गो एंड रिप्रेजेंट इन द कोर्ट, दैट इज व्हाट यू कैन से इज वकालतनामा इशू. यस यस यस, राइट. ठीक है, एक वकालतनामा सबके लिए कॉमन नहीं होता ना, वो तो आपका एक पर्सनल चीज है. ठीक है, सो वो आप जो आपका कोर्ट होता है वहीं पे यू विल जस्ट गेट इट. सो आप वहाँ पर उसका अकॉर्डिंगली आप डिटेल्स वगैरह फिल कर दें. सो दैट डिपेंड्स. या टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट, राइट. Okay. Any other questions? So, have you got clarity on today's topic about the legal notice? I'll just give you a brief answer again. Yeah, right, Rush. Right. Correct. About legal notice, about the drafting, I have also shown you sample. Ma'am, in the format you showed in that, can we add clauses also? No, Chaya. In legal notice, we don't have clauses. ठीक है, आप इसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर ही एक legal notice फ्रेम करते हैं. If you go on Google and you will search for different type of legal notices, ऐसा कुछ हमारे पास clauses नहीं होता है. So you don't need to mention clauses. आप सिर्फ ये है कि अगर सपोज 138 की जगह हमारे पास कोई और मैटर है तो उस मैटर के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है, बट इट इज मोस्टली इन पैराग्राफ फॉर्म.
ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट आई वाज शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो छाया आपने क्वेश्चन पूछा, तो जो वो लीगल नोटिस है दैट वाज बेसिकली ऑन एनपीएस। यू अंडरस्टैंड एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जब आप जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके एक ड्यूरेशन के बाद बैंक डिक्लेयर दैम एज एनपीएस। एनीवन ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस एनपीए कॉन्सेप्ट? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जब आपके क्लाइंट्स, अच्छा नहीं, तो बेसिकली आई जस्ट गिव यू लाइक जनरल अबाउट इट। क्या होता है कि जैसे सपोज बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, अब मैंने एक टाइम पीरियड के बाद भी बैंक को पेमेंट नहीं किया, ठीक है, सो आपको बैंक अगेन एंड अगेन इंटीमेट करेगा। फिर एक टाइम पीरियड आता है जब उनको लगता है कि ओके आई विल नॉट मेक द पेमेंट, ठीक है, तो वहां पर आपको बैंक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट कि भाई इससे अब पैसा नहीं आने वाला है, सो दे डिक्लेयर यू एज एनपीएस। सो जो वो लीगल नोटिस थे वो इन्हीं को लेकर थे कि आप एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आपने इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर यू हैव नॉट पेमेंट मेड द ड्यू पेमेंट, तो आपका यही एनपीए हो जाएंगे। आपका ड्यू अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ये है, उसके ऊपर पेनल्टी ये है। सो इन दिस वे दैट लीगल नोटिस वाज डिजाइन, ठीक है। क्योंकि शायद जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लीगल नोटिस का? इंटीमेट करना। सो इन दैट केस वी डोंट ऐड एनी क्लॉजेस, वी जस्ट गिव फुल डिटेलिंग कि हमारा केस क्या है, हम क्या रेमेडी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने डॉक्यूमेंटेशन उस केस के लिए किए हैं, दैट यू नीड टू मेंशन। ओके, छाया, राशि, लकेश, या सो अभी आप लोग जैसे सेशन के बाद अगर आप लोग जाएंगे, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, आप 138 का नोटिस देखेंगे। सो कहीं ना कहीं ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट रहता है। ओके, सो नाउ आई थिंक वी आर हैविंग 5 or 6 minutes more. So if anyone of you have any question, you can ask about today's session. कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। इट्स गुड कि आप लोगों को कम्युनिकेशन अच्छे से समझ आए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। Anyone of you want to discuss anything, want to ask any question, anything? I would advise कि एक बार आप जाकर ना 138 of an act go through it, so you would have a clarity. Anyone of you? If the check is dishonored and the legal notice served has some error, can it be reissued? Yes, that what I have given. Someone asked me, na, that how many times legal notice can be issued. You can reissue. There is no issue in that. You can just again सर्व द लीगल नोटिस। ऐसा कोई आपके पास फाउंडेशन नहीं है कि इतने ही लीगल नोटिस जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया। लेकिन हाँ, ये है कि जब आप नेक्स्ट लीगल नोटिस इशू करेंगे, सो यू विल गिव द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस वन। ओके शोभित, आप बताएंगे कि हाँ, ऑन दिस डेट वी हैव इशूड दिस नोटिस आल्सो, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस द पार्टी हैज नॉट कैन लीगल नोटिस बी डिटेन। यस शायद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस एक पैराग्राफ होना चाहिए या ये वर्ड लिमिट है, ऐसा नहीं है। आपका लीगल नोटिस ऐसा होना चाहिए जहाँ आपका पूरा प्रॉपर एक एक चीज आपके पास इन राइटिंग हो, सामने वाले पार्टी को पता रहे कि ओके हमने यही। अब जैसे अभी आपको मैंने जो दिखाया था, आई जस्ट शो वंस अगेन, इसके अंदर देखो, दे हैव आल्सो इफ यू कैन सी मेरा, in spite of many telephonic reminders and personal visit by the representative of our client to our office, you fail to make the payment due to our client. देख रहे हो आप, मतलब they have also mentioned, was that, yeah, just a second, yeah, छाया, so आपका ऐसा नहीं है, बस ये होना चाहिए कि every detail must be इन दैट। आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया है, आपने कोई प्रायर नोटिस दिया है, आपने उनको पर्सनली जाके ये इंटीमेट किया है, एवरीथिंग शुड बी देयर, सो दैट यू आर हैविंग एज कि ओके सामने वाला क्लाइंट ये ना बोल सके कि हमको इस चीज़ का इंटीमेशन नहीं था या हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। नो, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, अप टू द पॉइंट, ठीक है। डिटेल का मतलब ये नहीं है कुछ भी लिखना है, लेकिन जो लिख रहे हो दैट मस्ट बी प्रिसाइज, एवरी डिटेलिंग शुड बी देयर। ओके शाया, आर यू क्लियर ऑन दिस? ओके, क्या क्वेश्चन था? शोभित का हो गया। रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। मालविका, इज देयर अ लिमिट टू द नंबर ऑफ पेजेस इन द नोटिस और डज इट हैव टू बी? ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट आई जस्ट टोल्ड अबाउट।
कोई पेजेस का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये है क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक वो जो लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग हुआ था एनपीएस से रिलेटेड, इट वाज हैविंग मल्टीपल पेजेस क्योंकि आपका डिटेलिंग इतना था, आपको हर चीज़ उनको इन्फॉर्मेशन देना है। सो कोई लिमिट नहीं है, बस ये है कि डिटेल्स पूरी होनी चाहिए। सो कोर्ट के अंदर अदर पार्टी के पास एक भी रीज़न नहीं होना चाहिए दैट दे विल शो कि नो वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, आपने जो भी कम्युनिकेशंस किए हैं यू नीड टू मेंशन। ओके मालविका, या राशि हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर। ग्रेट। Lavkesh, can a law student send any legal notation? No, you need professional for this. Lavkesh, you need professional. Okay. Correct. What if the person targeted refused to accept the notice? Does it mean that no? अभी मैंने ऊपर यही डिस्कस किया था कि अगर आपका प्रॉपर डिलीवरी हुआ है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है नोटिस का, तो अगर सामने वाला पर्सन रिफ्यूज भी करता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी, देन ऑल्सो इन द कोर्ट यू कैन प्रूव दिस कि हमारे पास ये रिसीट है, सामने वाली पार्टी ने द पार्टी हैज रिसीव्ड द नोटिस, ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू था बट द पार्टी हैज रिफ्यूज। फिर जो बर्डन होगा वो उस पार्टी पे है कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स से कोर्ट को ये प्रूव करे कि उन्होंने क्यों लीगल नोटिस रिसीव नहीं किया। आपका सिर्फ इतना है कि आपके पास उसके सर्विस का प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव। ओके करणदीप? ओके, सो if no more questions you are having, then we can just hand over the session. Can we take a criminal action, depart the check? Can we take a criminal action if the person depart the check has changed the address? See, if that person has changed the address, then that also he will communicate in the court now. Criminal action तो सिर्फ आपका यही है कि if you have failed to make the payment within 15 days, in that case you can have that criminal proceeding वाला option. अगर एड्रेस चेंज कर लिया है एंड नॉट कम्युनिकेटेड टू यू, तो वो चीज तो आप कोर्ट के सामने रख सकते हो ना। गेटिंग माय पॉइंट अभिषेक? व्हाट इज द लीगल नोटिस अंडर पर्सनल लॉ? आई डिडंट गेट योर आंसर क्वेश्चन नुबा। देखो लीगल नोटिस बेसिकली क्या है, हर बहुत सारे पर्पसेस के लिए हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इन सीपीसी ऑल्सो वी आर सेक्शन नंबर 80। सो पर्सनल लॉ के अंदर भी बेसिकली अगर आपको कुछ इंटीमेट करना है सामने वाले पर्सन को तो उसके लिए लीगल नोटिस है। अब वेरियड लॉज के अंदर हमारे पास अलग अलग रीजंस है, अलग अलग केसेस हैं जिनके लिए हम लीगल नोटिस इशू कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड अपॉन दैट लॉ। ओके, अभी हमने सिर्फ एक बेसिक 138 एक जो हम कह सकते हैं टाइप ऑफ नोटिस जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया एनपीए वाला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो है, सो हर लॉ के अंदर अगर उनका कोई नोटिस का प्रोविजन है सो अकॉर्डिंगली इट विल बी देयर। ओके नुगा? या आयशा, आई एम यूजिंग। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू छाया। हर लॉ के अंदर अपना लीगल नोटिस होता है। लीगल नोटिस का एक बेसिक एस्पेक्ट वही है कि हमारा हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं सामने वाली पार्टी को, उस पर डिपेंड हो। अब प्रॉपर्टी लॉ के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन वारंट, लीगल नोटिस एंड समन, सो नुबा दैट इज लाइक अ बिग डिस्कशन टॉपिक। सो मैं भी आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे देती हूँ। ठीक है, लीगल नोटिस बेसिकली आपका हो गया इंटीमेशन, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, वहाँ आप सिर्फ लीगल नोटिस बेसिकली आपका इशू होता है बाय पार्टीज। ठीक है, लीगल नोटिस बाय पार्टीज आपका इशू होता है। वारंट एंड समन जो होता है वो कोर्ट इशू करता है, और वारंट एंड समन आपका जो सीपीसी है उसके और सीआरपीसी है जो प्रोसीजरल लॉज हैं उसके थ्रू गवर्न होता है। लीगल नोटिस आपका अलग अलग लॉ के अंदर जो भी आपका, जैसे सीपीसी में सेक्शन 80 है, एनआई के अंदर आपका ये 138 है, तो वो अपने अपने लॉज के अकॉर्डिंग वो गवर्न होता है। वारंट और समन बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अभी वो उसने कोई क्राइम किया या कोई पार्टी है जिसको हम कोर्ट बुलाना चाह रहे हैं, तो वारंट एंड समन बेसिकली क्या है, कोर्ट में बुलाना। दैट इज व्हाट वारंट एंड समन इज, कि कोर्ट बोलता है पार्टीज को कि ओके ये हम आपके ऊपर समन दे रहे हैं, ये हम आपको वारंट दे रहे हैं, आपको इसी स्टेट के ऊपर कोर्ट के अंदर आना है और अपना प्रेजेंस देना है। दैट इज व्हाट बेसिकली वारंट एंड समन। समन एंड वारंट के अंदर भी डिफरेंस है, बट वी डोंट हैव मच टाइम कि हम उनको डिटेल में डिफरेंस डिस्कस कर सकें। सो यू जस्ट गो थ्रू सीपीसी, ठीक है, बट ये तीनों में डिफरेंस है। लीगल नोटिस
पार्टीज इशू करती हैं, वारंट एंड समन कोर्ट इशू करता है, लीगल नोटिस जिस भी एक्ट के अंदर जिस भी लॉ में जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली गवर्न होता है, वारंट एंड समन रिलेटेड प्रोविजंस आपके पास सीपीसी और सीआरपीसी में। गॉट माय पॉइंट नुबा? Malvika, yes ma'am, on LinkedIn please. You can just simply search ADV Gargi Sharma, you will find me. Or if you are having this Shranshu added in this or any like number of unfolding lawyers, then you can find me. Nuba? Please clarify whether you have got this point. If a husband send a legal notice to wife for divorce but wife denies it, then what we can have procedure for that? Yes. Okay, okay. वही चीज अगर लीगल नोटिस डिनाई भी कर दिया है तो आप कोर्ट के जाकर बताओगे ना कि हमने लीगल नोटिस दिया था बट उन्होंने डिनाई कर दिया है, सो अकॉर्डिंगली कोर्ट विल प्रोसीड। ठीक है, वही चीज है, लीगल नोटिस ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिनाई कर दिया है तो वो लीगल नोटिस बेकार हो गया है, ठीक है, बल्कि आप यू आर हैविंग एन एज कि हमने सामने वाली पार्टी पे लीगल नोटिस सर्व किया बट स्टिल उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया या उन्होंने डिनाई कर दिया, तो आपको बस कोर्ट पे ये प्रूव करना होता है कि आपने जो नोटिस का डिलीवरी है वो प्रॉपर से किया है। इफ यू हैव प्रूव दिस पॉइंट तो फिर सामने वाली पार्टी के ऊपर बर्डन आता है कि वो इस चीज को क्लैरिफाई करेगा कोर्ट को कि हमने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ठीक है नुबा? आई थिंक वी आर डन विद द टाइमिंग, सो अभी हम नेक्स्ट डिस्कशंस आई थिंक नेक्स्ट सेशंस में ले सकते हैं इफ एवरीथिंग इज फाइन विद ऑल ऑफ यू। एक बार के लिए फटाफट से मुझे कंफर्मेशन दे दें। ओके, थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। ओके नुबा, and otherwise then everybody then only this time no that depends Shaya, that depends, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं कि कोई लीगल नोटिस का ऐसा कोई लिमिट होता है, ठीक है, बट वी आर हैविंग वेरियड लॉज, हो सकता है कि कोई अमेंडमेंट वगैरह से हो, अदरवाइज आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, सो आई डोंट नो हु वाज द होस्ट ओवर हियर। So thank you so much, ma'am, Yeah. for all the information you have given to us, and it is very valuable. Like when you're talking about 138th section of NI Act and clarifying laws of all the participants, and when you also talked about NPA, it was really fruitful and it was very valuable. Thank you so much for taking your time. Thank you, Shweta. Thank you everyone for joining in the session. So can I take exit, Shweta? Yes, ma'am, sure. Thank you so Okay, much. thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Thank you, ma'am. Good evening, participants. As the second guest speaker is Mr. Advocate Rahul Tiwari. He met a minor accident due to which he is unable to join us. If possible, he will be joining within 10 minutes. So wait for 10 minutes. After that, if he won't be able to join the meet, we will be share the feedback form to all the participants in the group itself. Not in the group itself, in the Google Meet itself. So wait for a few minutes. We will be right here back. So this bootcamp actually gives them very big foundation to litigation. So a more foundation litigation can be given from the course which is given by Interlegal World, and this course actually give a very good solid grounding to the litigation course, and it also gives a very
big coverage to CRPC and other special statutes as well. And the recent developments and case laws, which is very important nowadays for all the law students. So this course actually will help you to gain more insight into what is uh, litigation, and there will be additional readings and discussions as well regarding the case laws, the recent judgments, etc., which helps you to get more insight into litigation. So this course will be given by professionals and helps you to get more knowledge regarding the same. So as we have already talked about in the beginning, also Aditi has also given so much about the course. So if you want any, if you face any doubts regarding the same, you can let me or Aditi know regarding the same, so that we can help you out with the course, so that we can actually gain more information regarding the course. Also, as said yesterday, this course is actually providing so much perks as well. That is, I like to I like to say out the perks for this course. That is that online classes will be in evening, and recordings of the lectures will be provided, and certification of to all the participants will be given from the completion of this course, and certification of merit will also be given to all the participants, and which is like really very great, right? And also, and there's a confirmed internship to all the students who are participating in this. And also, in case of if there's a landmark judgment, if there's passed by Supreme Court, and this will be discussed apart from the syllabus. And the basic foundation and the idea of this course is to equip students with the fundamentals of criminal, civil, and constitutional laws. So basically, this is basically a combination of practical execution and interpretation of various statutes of law. And yesterday we also had Rahul Tiwari sir, right? So he'll be also one of the faculty for this course. So in this course, we'll be talking about the concept of CRPC, bareback reading, IPC, about section, most of the sections, and the legal notice, drafting, section 138 as also said by Gargi ma'am, and IPC, etc., which will be like really important for us law students as us, because CRPC is one of the very, very important subject right now for all the law students. And recorded classes will be also available for all the students here. And the schedules of each and every class from class 1 to class 43 is provided in the brochure. So have a look on it and let us know if you want to join us. And also, when you talk about the faculty, as I said before, Rahul Tiwari sir is one of the faculty for this, and he's a professor at Indore Institute of Law. And also, he is specializing in cybercrime and economic offense as well. And he is the former associate litigation firm Lamba and Lamba Gurugram, and the founder and associate Gurugram. And we also, the next faculty we have for this course is Advocate Prakash Pandey, who is the High Court at Allahabad High Court. And we also have Amrish Patel sir, who is the assistant professor at Indore Institute of Law, and the founder and director of Indo Legal World, and the member of International Trade Council, and the bestseller of 3 law books. So for more details, you can contact us. You can contact me, Aditi, or anyone who is in the admin of this group. And you have also, should I share the brochure once again? Maybe I can share the brochure once again in the group as well, so that you can get more information regarding the course. So if anyone is interested, you can join us. If any one of us is interested, then let me know. Then let me know us. Let the team know us. So this course is basically for all the law student as well as the who have completed their law degrees. We will provide you the certificates as well as the opportunity to intern in the various top tier firms, plus the senior advocates. Whosoever wants to join, whosoever wants to avail the course, then let the team know, and we would be very helpful to all of them.
Okay, if I may request, can I speak a few words? Yeah, sure, Shanshu. Okay, so greetings everyone. My name is Shranshu. I am from the team Unfolding Lawyers. Also, I am the admin of a legal page or a company you can call, where I am acting as a managing director and a CEO. Okay. So coming forward to the points, how many of you here are interested in research? Like, can anybody tell me? Rashi? I hope I am audible, right? Yes, so please repeat. Yes. Okay. So, Rashi, can you just tell me what research actually means to you? Not only Rashi, Shanshu, anybody I of, think anyone can tell this thing. What research means. yeah, but I guess I would be more excel by the answers that the participants provide us, not from the team. Uh, Anybody of you can just answer me. We can have a healthy one-to-one discussion about it, and then I can surely provide you solutions regarding to your problems. We can use the chat box as well. Sir, could you please repeat your question? My question, Urvashi, was ki what is research? Like, how do we conduct research is a different aspect. What I am discussing here is what is research, basically. So, research can be defined as detailed outlook on any of the topic and findings and data and finding the accuracy of that particular topic. Okay. And coming forward to what you said, like finding accuracy to the topic, can you tell me like what are the methods that we use for a research? Like from where we can take the references. References is what can be cited as sources. I am asking, let me reframe the question for you. Suppose I am writing a research on whether the laborers are being treated equally or whether they are getting the equal wages that are there. So how would you define it? So actually, I'm not getting your question. It's like taking the methodology for the research, right? Yeah, kind of. Okay, questionnaire method could be one of the answers. Philip John says survey, that could be second. Okay. Okay, interview can be the third option. Okay. Now coming forward to the point, what we are trying to discuss here is that how can research be helpful to a law student in formulating their career. Research is something that not only provides or embarks you with the values that you need in producing those petitions that you need to file. What I mean specifically is that if you are working for the good of the society, or if you are taking into consideration a client, suppose your personal uh, interest is there, pecuniary interest. So what happens actually is you first receive a topic. Suppose a problem that is being faced by a client is obviously a topic for you, where you need to thoroughly research on the basis that how you can provide a solution to it, like to the problem of the client. So can you tell me, anybody of you, that what are the procedures of filing a FIR? Anybody? Abhishek, Anirudh, Anjali, Anmol, Ashar, Ishika. Okay. Whosoever answers my question, I'll GPay you a sum of 100 rupees
out of random happiness? Anybody who can tell me all the five methods of how can we file an FIR? 100 from my side also. 200 now. Anybody can tell me. It's quite simple. Rashi, now we would ask you to please use your mic just because we cannot just shuffle the chat box again and again. That is why. Chahat Chaya. Then we have with us Devmali Das Gupta. Anybody of you can just answer it. It is a very basic question. First, you go to police station to file the FIR. Okay, that is case one. Then, if the police says no, like they refuses to file FIR, you go to superintendent of police, and Yeah, that is case two. then you can also go to police complaint authority. There's district legal services authority to take their help. Then you can also go to judiciary. Okay, can you just cite the sections like if you are aware of them? I think 153 or 154 of CRPC for FIR. Okay, that is And 154 sub plus 3. And if the police refuses or if you don't find the police officer there, then what are the situations that you may encounter? if police refuses, if police can't refuse because FIR is mandatory to file. Yeah, but coming to the if they ground do- level, you must be aware that there are situations where they are being oppressed by the police officials and they blindly refuse to register FIRs, right? Then you can go to superintendent of MR. Okay, Able to superintendent pronounce the of word. police, that is case 2. Suppose you went to the superintendent, what superintendent asks you to do is that they issue a order or they issue a, what we can say, a letter where they ask the concerned police authority to please issue an FIR. Even after this, if the police refuses to issue an FIR or Then you can refuses to carry on the case forward or is not completing the interrogation process and things like that, then go to state level district. Isha, we Yeah. can just wait a second. Rashi is speaking. Yes, Rashi. Then you can go to state level legal authority. Like State level you can take legal that. authority. Okay. See, that is a possible clause that you can refer to, but that is not what is taken into the picture. Just because we are discussing CRPC here, so just related to CRPC. Okay, so we can go to magistrate then. Okay, judicial magistrate is case 3. Do you know the section for that? No, actually, I didn't remember. Magistrate can do one thing. He can take that FIR into a private complaint. Yeah, that is section Under 200 of section CRPC. 200. Okay. Now, as we have discussed CRPC, discussing the procedural laws, what do you find more interesting? Like a general question, what is more interesting? Rashi, you can after this meeting ends, you can just drop me a message, okay, and we can have the conversation further. Yes. Now coming to a very healthy discussion of what is the difference between a procedural and a substantive law. Like CRPC is procedural law, CPC is procedural law, IPC all we know is substantive law, right? Samruddhi Gurav, Yes. Saptarishi Bandyopadhyay, then anybody of you can just unmute yourself and we can talk about it till the time the feedback form is being shared or we get a confirmation from the sir that he would be or would not be joining us. I think CRPC and CPC they already read on the procedure, whereas in I am IPC there are asking you, I'll ask a general question. The question is, what is the difference between a procedural and a substantive law?
There must be a fine line of Um, difference that differentiates. may I? Yes, Isha, May please. I? Yes, please. Substantive law talks about the rights and duties of the people, like IPC talks about the punishment and what amount of damages can be or punishment can be given to a person. Basically, talks about the crime. And procedural law talks about the procedure which can be followed to get justice in the court. Okay. So this is a basic difference. Okay. So you say that what procedure we follow is procedural laws, and the punishment for these crimes are the substantive law, right? Yes, and substantive law basically talks about the crimes and the what law is laid down for particular instances, like for contract. What are the rules for the contract? These are mentioned in Indian Contract Act. So if someone deny or won't get into their contract uh, or if we want to stop any person from getting back from his contract, then we can file a complaint against this person, and that procedure which would be followed to filing a complaint, that would be we can refer to procedural law. Okay. Okay. So Isha, can you just answer a basic question like what do you feel about the IPC, like taking IPC into consideration? Don't you find key that it is quite. Hello, am I audible? Yes, Yes, you you are. are. Okay. So what I am asking is, do you are you aware that IPC was made in the year 1860? So do you think that the interpretation of these clauses have changed from time to time? Yes, sir. It because Indian law system is quite flexible. It changes with the time, and new provisions are being added into and repealed again and again. Okay. So can you tell me? See, what I am trying to ask is, suppose when we take into consideration Article 21, okay, Article 21 has been analyzed and has been used under various cases as and on different perspectives. Somewhere it has granted right to life, somewhere it has penalized and also criminalized the act of smoking in public. So, what do you think are the perspectives that a court should take into consideration while analyzing vast covering articles like the articles who have a vast admit, like Article 21 is there, Article 19 specifically talking about the freedom of information and the freedom of speech and expression, coupled with the UAPA acts that were there and the acts like sedition laws. So, what do you think? What is the stand of this class on sedition laws? So, your question basically is what would court consider while interpreting laws, while interpretation of laws or articles? Yeah, So, this is your question. Huh. yeah. So first thing first is they must take into consideration the principles of natural justice. Secondly, they will deal according to the precedents, what have been previously followed in previous cases related to that case. And thirdly, if there is no relevant precedent over there, they would follow their own analogy on that perspective and decide the case for the same. So these are the three basic rules for interpretation. Okay, uh, that is great. I have like analyzed your answers. Okay, so now coming to the point, like you must be thinking of why am I asking so many questions? Okay, so what we are planning on is bringing to you some concept of subject based internships. Also, we would also be providing research fellowships. Also, we have a publication with us in Into Legal Worlds, that is the Into Legal Worlds publication, and also a journal containing a respected INI number. INI number, those who are not aware of, is a very respected number that is being granted for a registration of INI in international journals. Okay.
So we will also be providing research fellowships in the same context. So now coming to CRPC once again, what do you think CRPC is? Uh, like, let me reframe it for you. Is CRPC the need of the hour, or is there a need of new law, like a new procedural law for criminal proceedings, since the crimes are escalating so much, and also there are crimes like cyber security, impersonation, social thieving is there, and things like that. Anybody of you can answer my question. Isha, we Yeah, shall if hear your every answer once again. Like, let other people just speak, and we'll come back to you. Okay. Now coming to Malvika Chavan. Okay. Manisha. Anybody of you can just open your mics. You are investing your time in a boot camp. Obviously, you are here to hear about the healthy discussions that we are conducting as lawyers and law students, right? Ria, Ritesh, Shikha. Shrishti. I guess nobody is interested to answer the question. Isha, we can hear you now. Okay, thank you. So first thing is, he as already is aware that central government is already getting into action to amend the procedure law and all other important laws like IPC, CRPC, and many other laws. So I guess a new code will come in in the coming years to repeal these laws, like the labor codes have come into existence in these years. So I guess, yeah, there is a need to change the law right now, as there is crime increase day by day, or we can say, as per the new crime report, uh, is that could be an increase in crime rate, or we can say there is an increase in the police investigation system, because before that there is no very less filing of complaints in the police station, or we can say there is advancement in filing of police complaints and police clearing more and more efficiently their work. So yeah, we can say there is a need, and we have to cooperate with that, and we are the lawyers. We have to change the law, and we have to file now these things with the amending rules and changing scenarios. Okay. So yeah, this is Okay. Yes, Priya, I saw that you unmuted your mic. Is there anything you want to speak of? Abhishek will get the form corrected. I guess there is some error. Okay. Uh, let the team check. I'll drop a message. Okay. Till the time we can continue the discussion on the procedural. Okay, Divya also answered the question that procedural law creates mechanism for the enforcement of law, whereas the substantive law states the right and obligations of the person. Okay, so Divya Chaudhary, what do you think that if procedural law create the mechanism, and the laws itself have been created around 50 to 70 years back, so don't you think that the procedure to amend the laws that are being existent in the society needs to change from time to time? What are your views on that? Dev, you can answer, or I can ask anybody else to answer.
Uma Mukherjee, Rashi, Priya Rai. Anybody of you can answer as of now. See, Rashi, my question was, do you think that since the procedural laws are see, I'll tell you the context. They've answered that the procedural law create the mechanism for enforcement of law, whereas substantive law states the rights and the obligation of a person. Okay, so my question to the class is, do you think the procedural laws that were created to work the mechanism of the society that was 50 years younger to the present situation, do you think that these laws need to be amended, or there is a need of a new code in the society? Rashi, I guess you have received my question. Karandeep, you can also answer. Yes, sir. May I have the answer to this question? Sir, I believe that change is a law of nature, as we know. And the first thing that as our society changes, its law should also be changed. We should also, you know. But second thing is, I believe that as the society changes, um, we don't think there is a need for law changes, because we see complementary acts, complementary statutes that are being enacted along with these procedural laws. Like we have this cybercrime law, which is not included in CRPC itself, but we have seen it as a complement to CRPC. Okay. Shobit said that yes, there is an utter need for updation of the ways, but the core law shall not be changed. Provisions needed to be added. For example, a new law for bails was highly recommended by jurists and the Supreme Court judge as well. Okay. See, my sole question to you is that do you think that the laws that are there are adequate enough or not? Karandeep, I'm still talking to you. Yes, sir. Sir, as I believe, as I see, that we really don't have a need, because when we face anything like we don't have any law on that, we get complementary laws on those. Okay. Like cybercrime, like the new regulations on this IT Act, which are passed by the legislature in 2021. So we see these legislations, these complementary legislations, which keep on updating and keep on, Okay. That's what I believe. Okay. Sir? Yes, Devya, please. सर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये कहा गया है कि जो ओल्ड लॉ है वो एप्लीकेबल हो सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक न्यू लॉ जो है बन ना जाए, फिर मतलब ओल्ड लॉ को रिपील ना कर दिया जाए। तो अब चेंजेस तो नेसेसरी हैं ही अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए अमेंडमेंट्स होती हैं हमारी लॉज में। हमारे जितने भी न्यू बिल्स भी आते हैं पार्लियामेंट में, जैसे लेजिस्लेचर बनाता है, तो ओल्ड लॉ अब इसमें कुछ तो होगा जिस वजह से वो इतने सालों से, जो 50 इयर्स से ये चला आ रहा है। तो अब बोला भी गया है कि जैसे हमारे आईपीसी और जो मेजर एक्ट्स हैं और सीआरपीसी में जो है अभी हमारी कंट्री का खुद से बनाएंगे। तो इसमें चीज कही गई है, जो हमारा आर्टिकल है, कि भाई अगर ओल्ड लॉ जो इतना ठीक है अभी तक, तो उसे वो चलता रहेगा। अगर नया जो मतलब कि जब टाइम लगेगा या फिर जैसे वो बनाएंगे, अभी कर रहे हैं उसमें वर्क, तो फिर वो भी आ जाएगा। पर साथ ही साथ अमेंडमेंट भी होती रहती है। Okay. See, Divya, what I believe is, see, like I have asked you questions to each and every one of you. Karindeep answered, Isha answered, Rashi answered, Divya, you answered. So now coming to my opinion, what I believe is that the core is important, but it's time ki we change with the changing society, right? Earlier, the crimes were all related to dacoity, murder, rape.
Now the scenarios have changed and we are traveling and transversing to a newer set of problems like gay marriages, unnatural sex, and things like that. And also, what I believe is, Aditi, I request you to please check the form as some people are replying that form is still the same and things like that. I request each and every participant to check this link again. Okay. Uh, okay. Okay, till the time you fill the Google form, I was speaking about the core and what the principal values the society exhibits. So, coming to the society needs, what I believe is that society has evolved a long way. Now, coming to the changes that are there in the society, I am personally of a opinion that the core procedural laws, the punishment for a law is different. The procedural laws, like the ways of filing an FIR, we have introduced a proper scenario of how to file an online FIR and things like that. Cyber crimes के लिए we have cyber crime portals. Human rights के लिए we have a portal at the Human Rights Commission website. Yes, I am completely aware of that. But my personal opinion on this stance is that we need to change the procedure, the court functions. We have okay, so we have that online court proceedings that we talk about, right? That are streamed so that the people can come to know that what justice is being imparted in certain cases, and the cases that are of great societal values are being streamed, right? So now we can, what we can do is we can couple up technology with the new advancements in the society, and we can formulate a new whole set of division that would ensure proper justice to each and everyone in the society. Steps are being taken for it. I'm not saying that steps are not being taken for it, uh, but we need to also work progressively on these measures, that whatever laws are being made are successfully implemented in the society. Anybody of a different opinion can share his or her opinion. uh, Anyone from the team is also invited to please share or his or her opinion. Shweta, Yes. what do you think? Are procedural laws okay? Firstly, I'll give you a little context. Okay, Shweta, you are not in India as of now. You can just tell people that how are the laws implemented in your country? Like, So basically, I'm learning Indian law. hmm, So it is same as what is there in India. okay. I I don't, I know don't that have any you. touch. Okay, I'll give you a better context to it. My question is, since you are residing in Dubai and you are under the the crown prince of Saudi Arabia and all the laws that are there, like prevalent laws that you also need to follow as a resident of Dubai, like how do you think is the implementation of those different from the laws that are there in India? So here the laws are very, very strict compared to India. So each and every law, like let me take like very, very small example, like anything like let's say traffic laws or whatever laws it is, there is it's very, very strict here, and because of that it's like very efficient in this country, as well as UAE is actually regarded as like one of the most safest and most efficient country. So it's because of the laws which is present in this country, and it is like very efficient, as I can see. Okay. So, do you think that this efficiency is just because of the administration that is running the country, or are the residents of the country equally involved in this administration, like involved in proper maintaining of the laws in your country? Of course, citizens are playing a very, very important role in this economy as well.
because the laws which is given by the country is the people are following it very sincerely. So people's cooperation is very very important. So I can see people's cooperation in this country very much, and because of that, it leads to a very effective and efficiency in this country. Okay, Shweta, have you ever visited India? Yes, of course. Okay, so can you just point out a few differences that you feel are there, like are of core importance if we take into regard the judiciary aspect, like the courts or the the personal staking. Like we are, I am what I am talking about is about advocates, the way they behave here, the way they handle or tackle these situations, and what is different there back in Dubai. I haven't met any advocates here because all the advocates here are Emiratis, and I haven't met any of them, so I can't. I don't think so. I can give a precise answer to this. Okay, so what okay, one last question to you, Shweta. Okay, so what do you believe is more important in efficient running of a country, the citizens or the administration? Both play a very important role, 50-50 I can say, because the laws, whatever laws is given by the country, that needs to be efficient and that needs to work for the welfare of the country and development of the country as well. So whatever laws are there, that should work for the people. It should not like it should be like give it should be given equality to all the people who's living there, which helps in the betterment of the people as well. So if these laws are actually giving welfare and betterment to the people will actually follow these. So it is actually a 50-50, so that the laws as well as citizen are playing equal role in the society, which helps the betterment of the society, as well as it creates a welfare society as well. Okay, thank you, Shweta, for joining me on this discussion. Okay,